Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. सही बात है. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. ठीक है. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. You'll need to access the office while he's away. Okay. I understand. Very well. We'll find some way to get in. ठीक है. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे. मैं स्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक और नए एपिसोड में. तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोग सबसे पहले तो सेबेस्टियन से मिलने जाते हैं, जो हमें बताता है कि वो अब किसी भी हाल में रुकने नहीं वाला. जो रेलिक हम लोग उस गुफा से चुरा कर लाए हैं, उसे पूरा विश्वास है कि उसकी मदद से आन के श्राप को दूर किया जा सकता है. और वो कहता है कि जैसे उसे इस रैली के बारे में कुछ और चीज़ें पता लगेंगी, वो हमें दोबारा से मिलने के लिए बुलाएगा. इसके बाद दोस्तों हम लोग पॉपी की मदद करने के लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो वो रेयर क्रीचर है जिसका नाम है स्निजेट, पोचर्स को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता. इस लोकेशन के बारे में सेंटॉर्स को पता है. और वो कहती है कि अगर हम लोग सेंटॉर्स की मदद लें और उन्हें कहें कि हम लोग उस रेयर क्रीचर को बचाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे. हम लोग सेंटॉर्स के पास जाते हैं. हालांकि वो लोग हमारा इतना अच्छे से स्वागत तो नहीं करते. बस एक सेंटॉर होता है जिसका नाम शायद डोरान था. वो हमें कहता है कि अगर तुम उस रेयर क्रीचर को ढूंढ रहे हो तो साउथ में एक केव है, वहां जाकर ढूंढो. और पॉपी हमें कहती है कि वो उस केव को ढूंढेगी और हमें दोबारा से कांटेक्ट करेगी. और दोस्तों, इसके बाद हम लोग जाते हैं नैटी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि नैटी हार्लो और रुकवुड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जो वो ऑफिसर सिंगर को देना चाहती है. हम लोग उसकी मदद करते हैं और इस दौरान वो उसके रुकवुड के गुंडों के उसमें चुंगल में फंस जाती है. हम उसे बचा लेते हैं और सारे सबूत इकट्ठा करके ऑफिसर सिंगर को दे देते हैं. ऑफिसर सिंगर थोड़ा नाराज तो होती हैं कि हम दो अकेले ही इन गुंडों के साथ लड़ने चले गए, लेकिन वो अब ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन रुकवुड और हार्लो पर लेंगी. और दोस्तों, अंत में हम लोग मिलने जाते हैं मैप चैम्बर में जादूगर फिट्जगेराल्ड जी के पास, क्योंकि अब वक्त हो चुका है तीसरे ट्रायल का. और वो कहती हैं कि जब भी तुम तैयार हो तीसरे ट्रायल को फेस करने के लिए, तुम जाना हेडमास्टर ऑफिस में, क्योंकि वहीं से मैं तुम्हें आगे की लोकेशन के बारे में बताऊंगी. और उन्होंने ये भी कहा था कि हेडमास्टर ऑफिस में हमें उसी समय जाना है जब प्रोफेसर ब्लैक वहाँ पर मौजूद ना हो. तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि हॉगवर्ट्स लेगेसी में अब आगे कहानी में क्या होने वाला है. ठीक है दोस्तों, तो आज के क्वेस्ट में देखो, शुरुआत तो पहले ये है, द पॉलीजूस प्लॉट. I need to speak to Professor Fick about how to get into the headmaster's office. The keepers have something planned for me there. Speak to Professor Fick in his office. अच्छा, प्रोफेसर फिक से हमें बात करनी है इस चीज़ के बारे में, ताकि ये पॉलीजूस, शायद पॉलीजूस पता क्या है? मैं जानता हूँ पॉलीजूस क्या है. पॉलीजूस शायद मुझे हैरी पॉटर में याद है कि उसको पीने के बाद आप किसी के भी रूप में ले सकते थे. शायद हम लोग खुद एज ए प्रोफेसर ब्लैक बन के इस ऑफिस में जाने वाले हैं. ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं. अभी देखो, क्वेस्ट पता क्या है? एक तो पॉलीजूस प्लॉट है, ये तो हमारा मेन क्वेस्ट है. एक उसका भी आ गया है, क्या बोलते हैं आपका, नैटी का. अभी यहाँ पे था, कहाँ गया? सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको. ये वाला देखो, ग्रीफ एंड वेंजेंस. आई शुड आस्क नैटी हाउ शी इज बीन डूइंग सिंस आई हेल्प हर एंड मिस्टर रेब एस्केप द एशवाइंटर्स हाइडआउट. स्पीक विद नैटी. तो इससे बात करनी है, पहले ये करते, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोफेसर फिक से मिलने. देखते कहाँ जाना है. मैं हॉग्समीड तो नहीं जाना, नहीं, यहीं अंदर ही मिलना है. ठीक है, ये रही नैटी. चलिए नैटी से मिलते हैं. हाँ जी मैम, कैसी हैं आप? I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day.
I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. She should be proud of you. He concern is warranted. If she Proud knew to more hongi about what definitely. you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly ऑफिसर सिंगर कर क्यों नहीं रही मुझे समझ ही नहीं आ रहा. It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. ठीक है. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. ना तो इसकी कैसे गलती हुई वो? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Are you looking to avenge his death? How is mother doing? ठीक है. I'm so sorry, Natty. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. वो हमें भी ये सिखा देना ट्रांसफिगरेशन वाला स्पेल तो मजे आ जाएगा. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, ठीक है. beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We Okay. are making progress, and we will succeed. सही है. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. ठीक है. चलिए ये बातचीत तो हमारी इनसे हो गई. नेक्स्ट हमें अब करना है. अब चलते हैं प्रोफेसर विक के पास. चलिए दोस्तों ऑफिस तो पहुंच गए हम लोग प्रोफेसर विक के. फटाफट इनसे बात करते हैं. हेलो सर, कहाँ पे हैं आप? अच्छा रात होगी क्या? हाँ डेफिनेटली रात तो होनी पड़ेगी. नहीं रात वात का कुछ पता नहीं बट क्यों किया है आई डोंट नो. बिगिन द क्वेस्ट. यस सर. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They इन्हीं की तो helped वाइफ थी each वो. other at Rookwood Castle. इनके बारे में लॉर्ड कॉक जी She was बता रहे doing थे. research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The Acha. headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. हाँ मैं उसी के बारे में बात कर Just रहा the था. thing. A Polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. बढ़िया. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black?
One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. सही है. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. चलो शुक्र है. वो पोशन तो मैं भाई दारू की बोतल है तो पूरी. प्रोफेसर ब्लैक बन गए हम लोग. सही है. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. सही है. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. प्रोफेसर ब्लैक मतलब बहुत ही अकड़ू टाइप है ना. ठीक है. स्पीक टू मैडम कोगावा अबाउट स्क्रोप. ओके लेट्स गो. अभी मैडम कोगावा पता नहीं 134 किलोमीटर्स पर ही है. बढ़िया है. वो यहाँ पर कुछ है. अच्छा नहीं शीशा है. वो मेरी मैजिक स्पेल्स भी नहीं चल रहे भाई. ओके लेट्स गो. अब ये चलिए तब तक ये लॉक ही खोल लेते हैं फटाफट से फिर चलते हैं. यहाँ पर है कहीं. ठीक है बढ़िया. एम्बिशियस क्लोक. बढ़िया. ओहो कितना वैसा हो गया मौसम. ठीक है. ये लाइट्स की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir. If you insist. बाउल प्रॉब्लम शायद मुझे कुछ पेट से रिलेटेड बीमारी के लिए होता है ना. Thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. मजे ले रहे हैं हम लोग. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Greetings! I mean, out of my way, children. नीचे जाना है, नीचे जाना है. अरे यार क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. I thought I heard the headmaster approaching. अरे हट जाओ, बड़ा जरूरी काम है भाई. Okay. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? I'm good. I haven't time for any of you at the moment. None. Ominous था शायद वो. Professor, ये रही. a word? Yes, ma'am. उसी के लिए तो आए हैं. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. हाँ, इसने Quidditch मैच भी तो कैंसिल कर दिया है. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What?
nonsense. That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. That would be unwise. Please do. अब क्या करें, बात बिगड़ सकती है. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. I wonder why. ठीक है, अब हमें उस elf को ढूंढना है. Learn the password from the Scrope. What did we do to deserve him as a head? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. No, it's the headmaster and he's coming this way. यहाँ से. ठीक है. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh. Professor Fig की मदद कर रही है ये. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Secret Master and I don't miss him. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's हमारे बारे में बात कर रही है. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. ये हम खुद ही डर गए. I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, वरना कुछ और ना पूछ ले. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never... ओह ठीक है, यहाँ पर है. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time, or ever. ओह ग्रिफिंडोर हाउस कितने चला के देख रहे हैं हम लोग. ग्रिफिंडोर के बैनर से सजा दिया पूरा हाउस. ये जनरली तब होता है जब शायद कोई हाउस जीतता है ऐसा. अभी तो कुछ वैसा हुआ भी नहीं है. ठीक है, स्क्रोप से बात कर लेते हैं. Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. I have changed my mind. You dare question me? हाँ थोड़ा डराते हैं ऐसे. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. And what's that? वो तो पता ही नहीं हमें. Master does remember it. It's to do with strength. It's to do with family reign. It's to do with purity of blood. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's to do with purity of blood. It's to do with strength. Purity में शायद मैं कह सकता हूँ शायद. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope.
It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! ठीक है, पासवर्ड मिल गया. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. ठीक है, ये काम तो हो गया हमारा. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ठीक है. ओह भाई, अच्छा उसका असर खत्म हो रहा है, हमें निकलना होगा यहाँ से. अरे रास्ता कहाँ से है? भाग लो भैया, ऐसा ना कोई देख ले. Made it just in time. It's wearing off. ठीक है, यहाँ पे रूप बदल लेंगे अपना. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Okay. gargoyle के लिए जाना कैसे होगा? Quest complete the polyjuice plot. ठीक है. तो चलिए दोस्तों, अब हमारे तीसरी चुनौती का वक्त हो चुका है, जो कि है नियाम फिट्जगेराल्ड्स ट्रायल. ये है now that I have the password to the headmaster's office, I need to go in and speak to Niamh's portrait. Access the headmaster's office. चलिए गाइस, चलते हैं. हम लोग उनके ऑफिस के बाहर ही थे. ठीक है, उनके ऑफिस के बाहर ही पहुंच चुके हैं हम लोग. The gargoyle. That's where I need to speak the password. इसी के लिए तो पासवर्ड निकाला था हमने. उससे पूछा ना, जो क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे से जो होते हैं, नाम भूल गया उस चीज का. Toujours pure. ओ तेरी. ओ भाई, सही ना? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. चलिए, फील्ड गाइड पेज मिल गया. सही है. ये भाई प्रोफेसर ब्लैक, मतलब हमारा जो स्कूल का हेडमास्टर्स ऑफिस ये है. लेवल 2 लॉक्स होंगे यार. ये लेवल 3, लेवल 2. ठीक है, चलिए. आई थिंक अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. चलिए चलते हैं. यहाँ ऊपर की तरफ दिखा That रहे हैं. must be the pedestal. बुक के अंदर चले गए हम लोग. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Niamh. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. That takes many forms. Avoid each of them at any cost. Okay? Make your way through the town without being seen. What the hell? ये क्या, ये टेस्ट, ये ट्रायल तो कुछ अलग ही है भाई.
ठीक है, अभी तक तो सब कुछ चिल ही है। बड़ा अजीब सा ट्रायल है यार ये। I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Niamh must be here somewhere. ठीक है। I need to time this just right. भाई पता नहीं कौन है ये लोग ऐसे अजीब से। ओहो, आराम से। I see. A staircase straight ahead. स्टेयरकेस मुझे तो दिख नहीं रहा भाई। ठीक है, आई थिंक यही मौका है। ओह, भाई शिट, डरा दिया यार। कौन सी जगह है और ये क्या हो रहा है यार? मतलब A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. This is my chance. I'm coming, Niamh. Too many. I must cross this road as fast as I can. और कैसे इतने सारे यार ये? That's where I need to go. But I need to find a way past them. Oh shit, पकड़ लिया। Damn, bro. I need to get out of here! They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Niamh be? Too many. I must cross this road as fast as I can. चलिए, यहाँ से तो हम लोग निकल गए थे, यहाँ फंसे थे हम लोग। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई थी? That's where I need to go. अच्छा, ये इधर टर्न कर गया था। I need to find a way past them. ठीक है, जैसे ही मुड़ेगा शायद तब मुझे चलना होगा। ये वाले भाई साहब तो मुड़ ही नहीं रहे। मुड़ गए। चलिए, यार मैंने सोचा था कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई है, तो कुछ बहुत ही अलग सा ही ट्रायल है भाई। और यहाँ पे चलो, ओए तो सामने ही है।
nothing this way but more danger. There must be another way to find you. Must be another way. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oi! चलो, अच्छा ही हो गया. That doorway looks like the only safe way forward. ऊपर से रास्ता है यहाँ से. अरे भाई, Now's my chance. That's the way forward. Mysterious cloak. Oh, भाई साहब. Can this be? I think I'm invisible. ओ भाई, हमें एक इनविजिबल क्लोक मिल गया. ना भाई, ये तो खतरनाक चीज हो गई यार. मस्त. यहाँ नहीं, रास्ता नहीं है, यहाँ आ गई है. इनविजिबल क्लोक मिल गया गाइस हमें. देख ही नहीं पाएंगे भाई हमें अब. They can't see me at all. I can get closer to them. सही ना? खतरनाक, मस्त यार. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Niamh? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Ole. Oh. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. हम लोग को लड़ना होगा भाई. शायद मुझे ऐसा लग रहा है. ओ, ये तो कोई वॉन्ड, मिस्टीरियस वॉन्ड. लो जी. I've never felt such power. अरे मेरी पावर्स, मेरी वो स्पेल कास्ट इतना कम कैसे हो गया? अच्छा, हम लोग डार्क मैजिक का यूज ट्रायल्स के अंदर नहीं कर सकते भाई. और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि भाई डार्क मैजिक यूज करूंगा. एक मिनट, एक काम करते. ओ, मैं अपना स्पेल भी चेंज नहीं कर पा रहा. लो भाई, चलो अब. नहीं, शायद ये फिक्स्ड ही है, इन्होंने दिया हुआ है जो पावर ना. लो जी, लो. और शिट. ठीक है, ये तो निपट गए. ओके. ये वॉन्ड काफी पावरफुल है यार, सीरियसली. मैं तो सोच रहा था कि एंशिएंट मैजिक वगैरह यूज करना पड़ेगा, बट चल गया कहाँ अपना. और कूलडाउन भी बहुत जल्दी हो रहा है ये. ओह शिट, आराम से.
Depulsor. Descender, Depulsor. Father. Defender. Depulsor. Defender. Descender, Depulsor. Anyone else? ये क्लास ये रह गया। Defender. ठीक है। Oh God. Revelio. नहीं, कुछ नहीं छूटा है पीछे, चलिए। ओह, यहाँ लड़ाई होगी भाई तगड़ी। अब इससे लड़ना है ये भाई, ये होगा मुझे लगता है अपना फाइनल तो नहीं है अभी, तो और भी आगे लड़ाई ट्रायल्स हैं। एक ट्रायल और बचा हुआ है। ओके गया, ट्रोल तो गया। अच्छा चलो बढ़िया है, आराम से आराम से। अरे बहुत बंदे हैं भाई। पहले ट्रोल को मार लेते हैं। हाँ बढ़िया, इजी इजी। एक लास्ट रह गए, डन। इससे भी लड़ाई हुई नहीं हमारी, अब होगी शायद। हाँ ना, इससे पढ़ नहीं रहा है यार। ठीक है, और बंदे आ गए। बढ़िया, आराम से। अरे आराम से देखना भाई। ठीक है, बढ़िया। ओके, no one else? हाँ ये रहा। चले गया। ठीक है, बहुत ही अजीब सा ट्रायल है यार, कसम से। ये तीसरी चुनौती तो बड़ी खतरनाक है यार। खतरनाक तो नहीं है, बट बड़ी वेट सी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे खड़ा होना होगा। हमें पता क्या, एक तो मिस्टीरियस क्लोक मिला है और एक नई वॉन्ड मिली है। बढ़िया यार। This must be for me. अब ये क्या चीज है? अब पता नहीं एक और चीज क्या मिल गई हमें। मिस्टीरियस, वो तो नहीं, ये फिलोसोफर स्टोन क्या होता था वो जो हैरी पॉटर में? गजब। You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Okay. I can't believe she's dead. Oh, poor Niamh. Gone so. Niamh! May her memory be a treasure to us forever. उनकी डेथ हो चुकी है।
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Okay. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. I think I'm going to trial complete कर लिया, guys. Remember that as you witness my memory. Okay. कि मेमोरी हमेशा ट्रायल के एंड में होती है. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Niamh, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. और नहीं. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? ये खुद ही अपने अंदर ले रही है क्या इन चीजों को? This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. भाई ये लड़की तो हाथ से गई. बट उसने उनके अंदर से क्या निकाला जो और खुद उसने मतलब तरह से ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया उस चीज को. हम लोग मैप चैम्बर पहुंच गए हैं ना. हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं. हाँ आ गए. प्रोफेसर फिक भी आ गए. ओह सैम बकार ऐसा कुछ नाम है इनका. सैम बकार. Completed the first 3 trials. तीसरा ट्रायल भी हो गया guys. And I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? हाँ मैं वही बोल रहा था. She was. It was fascinating तो नहीं कहेंगे यार. It was disturbing, man. Seriously. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. Okay. I shall require time to confer with the other keepers.
ठीक है, ये हमारा आखिरी ट्रायल है। You have no choice but to wait, frustrating as it is. सही बात है। What you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? जी हाँ। And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted. In goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers and who? Who else? Isadora Morganac? Precisely. हो सकता है क्योंकि 4 तो यही He's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of उनसे the भी तो drills. बात होनी है। Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. charm, सही बात है। I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. ठीक है गाइस, हम लोगों ने अपना तीसरा ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आखिरी ट्रायल है जो कि है सैन बकार जी का। सैन बकार जी शायद मुझे लग रहा है इंडियन है शायद। ठीक है, 24 तक पहुंच गए हम लोग। अब देखते हैं हमारा क्वेस्ट में क्या है। अगली चीज क्या करनी होगी हमें, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ। प्रोफेसर कालिक, ठीक है, हमें साइड क्वेस्ट वगैरह करने होंगे। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज है गाइस, जो देखो कुछ आ गया। हाँ, इन द शैडो ऑफ द माउंटेन I received an order from Sebastian. It seems, despite our earlier disagreement, he would like to resume our search for the final piece of triptych. He's apparently found a lead on its location and wants to meet along the coast to the southeast. Meet Sebastian along the coast. हाँ, मैं इस चीज़ की बात अभी कर ही रहा था गाइस। तो अब आटा का डावरा शायद मैजिक को मुझे ना अनलॉक करने के लिए मुझे अपना लेवल भी इंप्रूव करना पड़ेगा। उससे 28 तक लेके जाना पड़ेगा। अभी हम लोग 24 पर हैं। और ये एक नया मिशन इन द शैडो ऑफ द माउंटेन। ठीक है, आई थिंक इसके बाद एक मिशन है इन द शैडो ऑफ द समथिंग कुछ है, उससे वो चीज़ आपकी जो लास्ट डार्क मैजिक है ना अवाटा का डावरा, वो अनलॉक होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वाला जो मिशन है हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि परफेक्ट एंडिंग होगी। हम लोगों ने तीसरा ट्रायल खत्म कर लिया है। इसके बाद सैन बकार जी का ट्रायल बचता है। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने दोस्तों अपना तीसरा ट्रायल भी, जादूगर फिट्जगेराल्ड जी का जो तीसरा ट्रायल था वो भी खत्म कर लिया। बहुत ही अजीब था, सिंपल था बट बहुत ही अजीब था। सीरियसली मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा था। और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं मुझे वहाँ पे, जिसमें एक था, एक तो इनविजिबल क्लोक था, फिर एक बहुत ही पावरफुल वॉन्ड मिली है और एक स्टोन भी मिला था। उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। और इसके अलावा दोस्तों सेबेस्टियन का आगे की क्वेस्ट सेबेस्टियन का एक और क्वेस्ट अनलॉक हो चुका है और जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द माउंटेन। और हमें ये क्वेस्ट करने बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये क्वेस्ट हमें डार्क मैजिक के और बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद करेगी। देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में, क्योंकि हम लोग जो ये जो क्वेस्ट है इन द शैडो ऑफ द माउंटेन, इसे हम लोग अगले एपिसोड में शुरू करेंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स, आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा आप सभी लोगों से अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।